Good morning, everyone. Good morning. Good morning. क्या चल रहा है? Guys, 1 minute. कुछ कर रहा है टीम. Good morning, Anurag. Good morning, Varun. जय श्री कृष्ण रमेश. सुबह सुबह मजा आ गया सबको. नहीं नहीं मैम, ये अभी 150 200% तक भी जाएगा. सिर्फ TP1 टू आईडी ट्रेड का. Guys, keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Okay, great. कोई भी डाउट है पूछ लो guys. Expect this movement as TP2 till 77.5, right? बट ध्यान में जैसे ही सेटअप फॉर्म होता है, छोटा छोटा एग्जिट करना शुरू कर दो. जब तक डायरेक्शन में है बने रहो, प्रॉब्लम नहीं है. Why this trade was executed at first place? This is for YouTube members. मार्केट में 150% मिनिमलिटी जो यहाँ पे जनरेट हुआ था, उसी मिनिमलिटी के हिसाब से 150% से यहाँ पे रिजेक्शन ली थी, राइट? सो इस रिजेक्शन के साथ इफ यू नोटिस, क्या हमारे पास यहाँ पे एंट्री सेटअप थी? नहीं. बट मार्केट ने फिर से आज के दिन टिल 150% की रेंज ऑफ मोशन में आके यहाँ पे रिजेक्शन लिया. रिजेक्शन 1, राइट? So with this rejection, what did market do? Market created a second candle formation with a proper rejection forming. Keeping in mind, where is the intact levels at the starting intact level, जो कि हमारा TP1 था. Where is the second intact level? Second intact level यहाँ पे है, right? At this formation point, हमें याद क्या लेके चलना है? Entry. यहाँ पे कौन सा सेटअप बना? जैसे ही मार्केट में ड्रॉप डाउन दिखा, what do we see? This we call it as S2B1, right? So always remember not to execute in the running. Setup बनने दो, बनेगा. जैसे ही setup बनेगा, look for an execution. No doubts at all. Just make sure to be waiting patiently to execute the trades in the direction. So in the same formation, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, right? If you notice, what do you see? 804, the levels were shared for the members. Where was the first candle? The first candle rejection. जो ये notice कर रहे हो? This is the place where we had shared the point of interest. Same point of interest के साथ, what do you notify? The market created the first green candle. When the first green candle was created, what is the major plan of actions that will be followed at the current state? Allocations, right? So whenever there is an allocation point formed, we look for an execution. Same with BTC, right? आते हैं BTC पे भी. So always remember not to execute the trades in the opposite directions. Reversal identify करना है. Wait for a setup to form. जैसे ही वो हुआ, 8:04 में, what is the next message that you notice? Exit 80% of the swing trades and let 20% run.
जो कि हमारा लास्ट 2 वीक्स से जो स्विंग ट्रेड चल रही है लॉन्ग की तरफ, वो ट्रेड्स का 80% क्लोज आउट हुआ। उसके बाद एग्जीक्यूट द ट्रेड विद द फॉर्मेशन 836। 836 का कैंडल नोटिस करना है, इंडियन टाइम लाइन में ही है ये भी, राइट। लेट्स कम टू 5 minutes, which was 856 कैंडल, 836। दिस was 836 कैंडल जो कि हमारा S2B1 सेटअप है, राइट। So in 15 minutes, this was the entry point where we looked for. वो दिखाने के लिए हमें 5 minutes में गया था, but executions 15 मिनट में ही होती है, right? उसके साथ जैसे ही 836 का मैसेज जनरेट हुआ, the next message was at 845, 60 pips running, right? So with that, always remember कि whenever you look for an execution, it should be in the proprietary of an execution point. डायरेक्ट एंट्री लुकआउट्स नहीं देखा जा सकता है, राइट। 848, 80 pips रनिंग, राइट। 9 o'clock 120 पिप रनिंग, एंड फाइनल TP1 हमारा आईडी ट्रेड का कहाँ पे हिट हुआ, at 921, right? This was the TP1 level which is exactly seen at this point. So always remember, so following a step-by-step guide is very much important, rather executing the trades randomly. TP2 कहाँ पे है, सेम सप्लाई का 150%, जो कि हमारा मूवमेंट आके 77.5 तक होगी। But keeping in mind all the MNP and LTD members, 1, 2. This is the only two defect points which you will be having on the add-on. Okay. Hope all your doubts are cleared, guys. Why the trade was towards the long. Step-by-step process while learning is very much important to make sure that your losses is very minimal and profits are big, right? So that's the only fundamental thing that you will be following. इस मूवमेंट में मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट एन आईडी ट्रेड जो कि 150 पिप्स में चल रही है अभी। बट इन केस ऑफ द सिनेरियो, हमारा MTSL पॉइंट कहाँ पे रहेगा, 130 पिप्स। सिस्टम ट्रेलिंग कहाँ पे रहेगा, 100 पिप्स। सो ऑलवेज फॉलो अ सिस्टमैटिक प्लान रूल to make sure your capital and the profits is protected. प्रोटेक्ट होना चाहिए हमेशा। जब जब प्रोटेक्ट होता है तब तब ही आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है। So 3 layers of risk to reward allocate करो, which is mind system trailing and SL. जब ये 3 point of action में लेके चलोगे, you will understand a proper right growth movement of your account. इसके बाद आता है BTC में शॉर्ट के तरफ, वाई मिनिमलिटी के साथ। एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पे शेयर हुआ था, इफ यू नोटिस वेयर वाज द एग्जीक्यूशन, S2B1 के साथ यहाँ पे। विद दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ट्रेड इज रनिंग एट 850 पॉइंट्स, जो कि 1300 पॉइंट्स जाके अभी 830 पॉइंट्स में चल रही है। दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज मार्केट में इंटैक्ट लेवल्स डेवलप हुई थी। इंटैक्ट लेवल्स जब जब डेवलप होता है, we wait for a rejection perspective. Why? Because जैसे ही 100% close हुआ है, this is the 100% range, right? So with this 100% range, what do we do? कैंडल क्लोज हुआ, 200 हुआ, 200 क्लोज होने के बाद मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन सरप्लस। सरप्लस ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 to the nearest point, reallocate the structure 1,
and 2, right? So this is the notifications that you have to always follow. अभी भी इसका मूवमेंट पेंडिंग है, नो डाउट, बट कब तक, कहाँ तक? 1 आवर का थ्रेशोल्ड फॉर्मेशन एंड 15 मिनट्स में S2B1 या 3 विंग सेटअप जब तक नहीं होता है तब तक ये मूवमेंट शॉर्ट की तरफ ही होने वाली है. Hope all your doubts are clear for today's morning movements what you have captured. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या देखना है हमें? रिट्रेस होगा तो कहाँ तक? So, do we have a break of structure? Yes, we do have a break of structure. Do we have a conversion? No, we don't have a conversion in this point. So, what is the first conversion point of actions that we'll be working on? Supply converted into demand. ये allocation जो मैं कर रहा हूँ, मैं पहले ही कर रहा हूँ, but आप लोग हमेशा फर्स्ट रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट का फॉर्म होने के बाद ही लगाना, ठीक है? So if you notice, this movement isn't covered fully in the intact level. मतलब ये movement possibly 150% तक आएगी to cover up the intact zone. ठीक है? So that is how you have to start reading the markets. But आप लोग starting में क्या करना? एक रेड या ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन का वेट करो, उसके साथ ही एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ मोशन में बने रहो. किसी को भी कोई डाउट? Follow the intact level chapter so you will be able to identify the structures easily. September 23 कल के दिन UTC 5:45, 23rd 5:45 to 8. No, this is not a POI. POI range should be in an action plan of inducement, which is हर एक कैंडल के साथ पार्टनर्स रहेगा. अगर फर्स्ट कैंडल रेड होगा, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल रेड होगा तो फोर्थ कैंडल ग्रीन. So that is how the POI is formed.
एग्जाम्पल दिखाता हूँ so that it will be easier for you. Right? If you notice, green, red, green, red, drop नीचे आया, zone of action, and हमेशा याद रखना पीओआई उसी के तरफ ब्रेक होता है जिसके तरफ की मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन में डेवलप होती है. एंड सेकेंड चीज, POI range should always be compared with the previous POIs, right? जो प्रीवियस पीओआई रेंज का जो लेंथ रहता है, विड्थ रहती है, इट विल बी द सेम लेंथ एंड विड्थ which will be in the current form, right? Example 1 2 1 2 1 2, right? 1 2 ब्रेक ऊपर की तरफ हुआ था, मूवमेंट नीचे के लिए till 150%. So in this scenario मैं ये POI कहाँ से लूंगा? Where is my previous POI range? My previous POI range is at this point, correct? So this will match my current POI over here. If you notice, हमेशा याद रखना, that is how market follows. ये आपको क्यों कोई भी नहीं बताएगा. जब जब POI range of actions develop होता है, तब तब movement circumstantial ways में ही दिखता है. There are two types of POIs, book में है, please follow that. One, इसके बाद यहाँ पे था ना, what do you see? Same. It's always the same. कुछ भी कर लो. There are two types of POIs. Please follow that. There are two types of POIs, Anurag. Intact levels. There is a chapter called as intact levels. What just happened? How did you know that there could be a rejection? This did not break on the downside and then upside. Okay. Also, is it compulsory that every time when POI breaks, market will go opposite directions? There are two setups, Anurag. Second one was break of POI and then a formation of small consolidation and execute at the setup, right? So yes, that's right, Varun.
BTC in long for quick ID। स्मिता मैम, इसको मैसेज करके मैं एक आपको फॉरवर्ड किया, वो भेज दो ना। नहीं नहीं अरुंधति मैम, राइट डायरेक्शन में, प्रॉब्लम नहीं है। Sir, why were we expecting a rejection to why were we expecting a rejection to look for an add-on? मार्केट इतना आसान नहीं होता है, हमेशा याद रख। What do you notice? Big, big two candles. In this running में लोग बैठते हैं। जब रनिंग में लोग बैठते हैं, market will never give them money. Very rare scenarios you find that. Because I've gone through the whole book but not able to find any mentions of intact levels anywhere. That's why I'm asking. कहाँ पे लिया है सर आपने बुक? ना आपके नाम प्रवीण अमेजोन में है, ना आपके नाम यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग राजीव, कैसे हो? आई एम डूइंग गुड राजीव, थैंक यू। अगर यहाँ से ही जाता है हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है?
we'll look for the regular trade which is from S to B1 setup, वही carry forward होगा. अगर add on करना है holding के लिए, swing के लिए, then let it come down to the liquidity graph. किसी को भी कोई doubts है, please do ask. Streaming will be there for next 25 minutes. Good morning जय जी, कैसे हो आप? नहीं नहीं अंबिका, not yet. POI can form anywhere or any specific place in allocations. Also, it can be in any combinations of red, green, red, green. Yeah, the combinations is not an issue, right? And POI range is always formed wherever there is a iceberg volume. भाई वरुण, पता है 800 पॉइंट चल रहा है. तो इधर जूम में मैसेज करो सब, यूट्यूब में मत कर. सॉरी गाइस, एक ऐड ऑन हो गया. अगस्त्या, MTSL क्रैक आउट करो ना. 2000 to 800 के रेंज में रखो. वरुण तुम्हें भी सेम ही है. TP1 113 200. पूरा मजे ले रही है फैजा आज पे. उस्मान नदीम, समटाइम्स मार्केट POI जोन बनाता है, देन वन साइड फेक ब्रेकआउट देता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आता है. दैट इज POI 1.0. करेक्ट. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और समटाइम्स सम सेम डायरेक्शन में मूव कर जाता है ब्रेकआउट के बाद. हाउ टू आइडेंटिफाई. रेसिपी बुक से एक प्रीवियस मैसेज आया था, वो देख लेना उस्मान जी. एंड POI के चैप्टर पढ़ लो उस्मान जी, उसमें सेकंड फॉर्मूला भी बताया, हाउ टू आइडेंटिफाई. नहीं नहीं गाइस, हर्षित मत करो, रहने दो, चलने दो. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं 200%. चलने दो, रुको. वैशाली, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हटाना था.
जो 7 पोजीशंस ओपन है उसमें से। बट ओनली वन बैड थिंग ऑफ फैजा, किस खुशी में यहाँ पे एंट्री की है मेरे को समझ में नहीं आया। देखो वैशाली का फॉलो करके चलो तुम भी लगे। नहीं गोल्ड एड ऑन नहीं हुआ है, 150 तक आना था। 100% से रिजेक्शन गया कन्वर्जन। ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। हाँ। किसका है सर बता दीजिए। एंड टेलीग्राम पे क्यों मैसेज कर रहे हो, यहाँ पे मैसेज करो ना लाइव पे। क्लोजिंग इज कंपलसरी फॉर बीओएस टू मार्क कन्वर्जंस। यस, प्रीवियस रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बट एड ऑन पॉइंट इधर से लेना, इट विल बी ए वेरी हार्मफुल जॉब यार। जो नीचे से चल रहा है वही है नहीं। वर्षा, जिपो में फ्लूइड खत्म हो गया है, चेंज करा दो। किसने बुलाए? कोई बंदा है। पूरा नाम भी नहीं लिख सकते। पॉइंट आ गया। 150। जो जो बिगिनर्स है, बीटीसी में फोमो में एंट्री मत करो, सेटअप फॉर्म होने दो।
MTSL को 150 पिप्स में रखो, सिस्टम ट्रेलिंग को 130 पिप्स में रखो गोल्ड, जो आईडी में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को। एक नंबर। अच्युतम केशवम कृष्णम राम नारायणं जानकी कौन कहते हैं तुमको When minimality is formed, market will cover that minimalities on the same day or can cover later on the next day. किसमें पूछ रहे हो अनुराग? कवर कभी भी करे, बट 150% M1 क्रिएट होता है तो कंफर्म है, एंड उसके बाद 200% अगर M2 फॉर्म होता है तो 200% कंफर्म है, लेट इट बी ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 days आफ्टर कंसोलिडेशन. आएगा आएगा, आने दो, सेटअप बनेगा, सेटअप में आप लोग ऐड कर लेना.
पीटीसी बिना विक का मूवमेंट क्या है ये? मजा नहीं है। हाँ, अगर सेटअप फॉर्मेशन हुआ है 150% के पास, उसके साथ 150% से एस टू बी वन या थ्री विंग सेटअप फॉर्म हुआ है, उधर ही आपको एग्जैक्टली वॉल्यूम स्पाइक दिखने को मिली है, डेफिनेटली रिवर्स वहां से ही होगा। सरपास कंटिन्यूटी में कहा कब बन कहा मिलेगा, जब वो सिर्फ एक रिट्रेस एज पर द प्रीवियस सप्लाई डिमांड। समझ गया मैं। एक कहा से कहा लाइन ड्रॉ करते हो, आपको ही समझ में आना। लाइन ड्रॉ करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्ड नहीं होती है। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालना सीखो, उसके बाद सिखाओ। थैंक यू सर। डेफिनेटली सर, मैं सीखूंगा। कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है मैं सीखूंगा पहले। Stream will be there for next 15 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. कौन सा दिन का है 5:45? Which day, अनुराग? कल के दिन? कशा इसको हटाओ यार इधर से। ब्लॉक करो। अगर ट्रेडिंग आती है तो आरएसआई क्या है, बॉल्जरिंग बैंड क्या है, बताओ। नहीं पता सर। ओ माय गॉड। यस्टरडे। ओके। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ ट्रेड करना होता, मे भी आप लोगों के साथ ही होता। कल के दिन यूटीसी 5:45। 5:45 से लेके 7 बजे। ओके। which broke 100% and continued. Okay, but it has completed more than 150। क्या बोल रहे हो अनुराग? हुआ है ना। हाँ, कभी कभी 20% कंप्लीट नहीं होता है।
क्योंकि इधर देखो, what do you notice? Let's come to 1 hour. इधर तक गया, market took a rejection, no volume, but in this candle, volume spike changed. So when the volume spike changed in this candle, what does the market do? Market tend to reverse. That's the reason 200% wasn't completed. Good morning, Eric. EMA का है 9 और 15 EMA के बिना ट्रेड कर ही नहीं सकते हो. ओके सर, आप बड़े हम छोटे, आपकी बातों सराखों पर. So it can complete that 200% later, or that allocation is done and dusted. No, not yet completed, Baba. Done and done and dusted. वैसे नहीं बोल सकते हो ना. See, you have to notice, Anurag, what has the market done? Definitely यहाँ पे 100% break हुआ इस zone of action पे, उसके बाद movement develop हुई, right? In every candle there is running sitting. Sorry, in every candle there is a runner retailer who is sitting. When there is a runner sitter in the trade, always remember, as per ITC, they will follow a fair value gap. This is the entire fair value gap. In this entire fair value gap, they will add one more, which is called as Fib extension. Sorry, Fibonacci retracement. यहाँ पे Fibonacci retracement डालो. This is 0.5. यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, राइट? उसके बाद मार्केट थोड़ा देर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ब्रेक हुआ 0.5 लेवल. यहाँ पे बोलेंगे मार्केट इज चेंजिंग द स्ट्रक्चर, सो विल सिट डाउन. सो यहाँ तक की रेंज ऑफ मोशन में पीपल, जितने भी लोग रनिंग में बैठे हैं, पीपल हु हैव सैट इन रनिंग, their liquidity is pending. That's the reason the wick is not created. If you notice, when the wick is not created in the moment, the market comes to the point of action to regenerate the wick. Example, no wick, no wick. Means there is a liquidity grab point. That's the reason we call it liquidity grab, right? Definitely market will come to that point. What do we notice? Where is our minimality? 150%, exactly in the same zone, right? So that's how liquidity is hunted. वर्षा, इसको ब्लॉक करो यार प्लीज. What did he say now? Okay, noted down. कौन क्या बोला? ये बंदे की बात करो. He's saying he's having 8 years of experience. And he has never seen this kind of thing before.
in 8 years is still in break even. तो समझ लो मिस्टर AK8743, जो भी आपका रियल नाम है, 8 साल लगे आपको ब्रेक इवन में आने के लिए. नो डाउट यू हैव पुट इन द एफर्ट्स, यू हैव डन द हार्ड वर्क. उसके साथ पेशेंस बोथ है आप में, विच इज वेरी गुड इन द मार्केट. बट एक चीज बताओ, अगर आपने इतना टाइम लोगों के ऊपर शक करने में लगाया है, इतना टाइम आप सीखने में लगाते ना, डेफिनेटली एक you could have grown bigger and better and faster. सर सेटअप जब चार्ट पर बनता है तो समझ नहीं आता, जब मार्केट का मूवमेंट हो चुका होगा. वन सेकेंड सर, जब सर सेटअप जब चार्ट पर बनता है तो समझ नहीं आता, जब मार्केट का मूवमेंट हो चुका होगा तब समझ आता है. या तो S2B1 सेटअप बना हुआ था इसलिए इतना मूवमेंट ना आया. प्लीज गाइड लाइव में कैसे. नहीं रमेश, ये तो सेटअप पहले से ही बना हुआ था. ये फॉर्मेशन हमेशा याद रखो, जब भी क्रिएट होता है ना, मार्केट में एक हलचल दिखती है. अगर वो मिनिमलिटी रेंज हो या कंप्लीशन ऑफ सप्लाई डिमांड हो, वहां पे दो कैंडल के बाद तीसरी कैंडल रिजेक्शन दिखती है ना, तभी से ही ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है. अगर हमारा जो अगर थोड़ा रिवाइंड करके देखोगे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रमेश, वहां पे हमारा एनालिसिस में अगर नोटिस कर रहे हो 150% तक ही इमेज था, हमने उधर सेटअप नहीं डाला था. हमने वहां पे खुद बोला था कि एंटर इनटू द ट्रेड विद द फॉर्मेशन. राइट? क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन मार्केट ने दे चुकी थी. आइसबर्ग जोन ऑफ एक्शन होने के बाद अगर नोटिस कर रहे हो आज का दिन में, the entire iceberg zone होने के बाद, this was the red candle which gave us the indication with high volume for today. Right? When there was a high volume formation, what did market tend to do? Market tend to reverse. That was the simple understanding. उसके साथ it was near minimality 150%. Hence the trade was executed towards the long. Okay? होप आपका डाउट क्लियर हो चुका है रमेश जी. आई थॉट आप गुस्सा करोगे, चिढ़ोगे मेरे ऊपर, बट आप चिढ़े नहीं. Start meditating, Mr. AK. Life is beautiful. I don't have time for crap. Okay, sir. Thank you so much. No worries, Ramesh. नहीं नहीं, दसरा होने तक वेट करो ना, उसके बाद इंडियन मार्केट भी स्टार्ट. फंड्स फ्लोइंग तो होने दो. ये क्या है, 1x 2x ऑप्शंस में पकड़ते, 10x पकड़ेंगे. 10x ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड आई एम टॉकिंग. नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओके पैसा 10 गुना हो गया उसका बात नहीं कर रहा.
10x of what we follow the risk to reward is what I'm talking. Be practical. ग्रीड मत डेवलप कर लेना सुन के. And we have captured 10x of the capital as well in the market. हाँ वो Q1 Q2 में हमेशा करेंगे यार. प्रॉब्लम ही नहीं है. फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है ना, तो वहां पे डेफिनेटली मिलता है. अब जाके सेम रेंज एवरीडे पूछोगे तो वो नहीं मिलेगा. When any allocation is completed, we will wait for the setup formation. After that, we will instantly mark the further allocations as per previous or wait for certain structure to form. There is nothing to wait for a structure. What you can do at this point of juncture is wait for one single candle closure. अगर retracement form करना है, direction allocate करना है, या रिवर्सल मार्क करना है, वन सिंगल कैंडल मैप होने दो डायरेक्शन, तब जाके अलोकेशन देख सकते हो. ठीक है. फैजा की हार्ट बीट बढ़ रही है अब. फैजा और एक कैंडल भी आ गया ना. एक एक रेड कैंडल आएगा यार. सेम रेंज में और एक या दो होगा. उसके लिए बोलता हूँ फोमो में एग्जीक्यूट मत करो ट्रेड्स. ऑल द न्यू मेंबर्स, ओनली वन सजेशन. जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हो, back tested for 6 months, forward tested for 6 months, do the live analysis for 1 or 2 months, then come with a small capital, compound the capital, and build the capital. With that, follow the risk to reward. We follow a risk to reward of 20 pips and 200 points, and 40 pips and 400 points in London and New York sessions. उसके साथ protect your capital with following a proper risk to reward, and comprehend your mind with not getting into the trap of FOMO and greed, so that you can grow, keep learning, and keep following, because it's your money, your capital, your mindset. If you discipline and consistently build your brain and capital, then definitely you will be able to sustain in the markets. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.